Hi everyone, welcome to Econoplus. In this video, we will be discussing about post-independence poverty estimation committees in India. In the last class, we have already discussed pre-independence poverty estimation committees. Those are Dadabhai Naroji Committee, 1901, National Planning Commission, 1938, Bombay Plan, 1944. तो जो मैंने प्रथम भिडियोटी को देखी ना प्रथम देखी दिंतु जहाँफल ये भिडियोटी बुझापी सहज हे। तो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1962 रे प्लानिंग कमिशन गोटे एक्सपर्ट ग्रुप बा वर्किंग ग्रुप कन्स्टिट्यूट करथिले। डॉक्टर गडजिल से कमिटी बा से वर्किंग ग्रुप रो चेयरमैन थिले एवं सी कौन तांकर फॉर्मूला देथिले ना गोटे सेपरेट पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। प्रथम थर पई रूरल एरियाज पई आ अर्बन एरियाज पई सेपरेट पॉवर्टी लाइन 1962 प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप प्रदान करथिले। एवं सेथिरे कोन कहैथिला जदि जणे गोटे परिवार रे 5 जन लोक अछंती ताहले जणे लोक जदि 20 टंका इनकम करूची ताहले 5 जन करिवे 100 टंका 5 गुण 20। सेमती एटा थिला रूरल पई। सेमती अर्बन पई जणे लोक जदि 25 टंका इनकम करूची पर डे पर ईयर पर कैपिटा पर ईयर ताहले 5 जन 125 टंका इनकम करिवे। तो एटा थिला रूरल पई 100 पर मंथ इन टर्म्स ऑफ 1960-61 प्राइसेस, फॉर अर्बन 125 per month in terms of 1960-61 prices. This national minimum excludes expenditure on health and education, and it is widely used as a poverty line in the 1960s and 70s. तो ये था प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप किसी डिटेल्स। तो यार आमर चेयरमैनशिप धनंजय रामचंद्र गडजिल जी कि परवर्ती समय रे गडगिल फॉर्मूला देथिले जहाँकि सेंटर रु स्टेट जो असिस्टेंस ट्रांसफर होता है तार फॉर्मूला गडगिल फॉर्मूला प्रदान करथिले। इज द वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया। तो थिला प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप विषय। तापर आसीथिला दांडेकर एंड रथ कमिटी। सो VM दांडेकर एंड N रथ in the year 1971 made the first systematic assessment of poverty in India. तो प्रथम systematic poverty assessment इंडिया रे स्टार्ट होता दांडेकर एंड रथ कमिटी द्वारा, which based on national sample survey data, जहाँ कि national sample survey डाटा रो आधार रे हेइथिला। Unlike the previous scholars who had considered subsistence living बा minimum नीड्स क्राइटेरिया आगु थिला सब्सिस्टेंस लिविंग बा मिनिमम नीड्स क्राइटेरिया बिफोर इंडिपेंडेंस, किंतु दांडेकर एंड रथ तांकर क्राइटेरिया थिला एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। सो ग्रामांचल एवं रूरल एंड अर्बन एरियाज रे 2250 कैलोरी पर डे 2250 कैलोरी पर डे होची पॉवर्टी लाइन। ताठू जे कम कंज्यूम करूची बा एक्सपेंडिचर करूची सेतिकी कैलोरी पाउ नाही जे होची पुअर। दे फाउंड दैट पॉवर्टी लाइन टू बी 15 फॉर रूरल एरियाज, 22.5 फॉर अर्बन एरियाज एट 1960-61 prices. So first systematic assessment of poverty was done by दांडेकर रथ कमिटी। तापर आसीथिला अलग कमिटी 1979 रे। It was constituted in 1977 and submitted its report in 1979. Alak committee is a task force constituted by the planning commission under the chairmanship of Y.K. Alag. तो यार chairman थिले Y.K. Alag constructed a poverty line for rural and urban areas on the basis of nutritional requirements and related consumption expenditure. So nutritional requirements अलग कमिटी देथिले
poverty estimates for the subsequent years were to be calculated by adjusting price level of inflation. So inflation को adjust करिकी दरदाम जो बढ़ी जाउची ताको adjust करिकी poverty line calculate करा जाउथिला ना कि जहाँ फिक्स अछि सेटा ही करा जीवो. तो योगेंद्र के अलग was an Indian economist and Union Minister of Government of India. He was the chairman of Institute of Rural Management Anand IRMA from 2006 to 2012. The poverty line was defined as the per capita consumption expenditure level to meet average per capita daily calories. Average per capita daily calories जदि 2400 for rural areas 2100 for urban areas कारण urban areas लोक मानकर फिजिकल एक्टिविटी कम थाए तेणु से कम कैलोरी कंज्यूम करथांती एवं रूरल एरियाज फिजिकल एक्टिविटीज बेसी थाए तो बेसी कैलोरी कंज्यूम करथांती 2400 यांकर होची 2100 तो यहाँ प्रथम देइथिले अलग कमिटी. The average calorie requirement were estimated as a population weighted average of the age gender activity specific calorie allowance recommended by the nutrition expert group based on 1973-74 prices. Task force set the rural urban poverty line at 49.09 and 56.64 per capita per month at 73-74 prices. तापर आसला लकड़ावाला कमिटी 1993 रे. लकड़ावाला कमिटी 1993 टास्क फोर्स चेयर बाय डी.टी. लकड़ावाला was a noted Indian economist. His contribution in the area of poverty measurement continue to be relevant today. He spent most of the life as an academic at Mumbai University. He was served as deputy chairman of the Planning Commission and director of the Center of Monitoring Indian Economy. तांको विषय किछि इनफॉरमेशन तापरे देखिबा हमें से प्रथम थर पई कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर consumer price index industrial worker CPI-IW and consumer price index agricultural laborer CPI-AL सेटा देइथिले. तापरे तांकर कोन सजेशन सब थिला ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन एज अर्लियर जहाँ आगुरी थिला कैलोरी कंजम्पशन. सेकेंड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन प्रदान करथिले लकड़ावाला कमिटी. स्टेट स्पेसिफिक शुड बी कंस्ट्रक्टेड एवं से CPI-IW अर्बन एरियाज पई CPI-AL रूरल एरियाज पई CPI-IW माने इंडस्ट्रियल अर्बन एरियाज AL माने एग्रीकल्चर माने रूरल एरियाज. Then discontinuation of scaling of poverty estimates based on NAS National Account Statistics NAS. लकड़ावाला कमिटी पर आसला तेंदुलकर कमिटी. It was set up in 2005 and submitted report in 2009. Expert group constituted by Planning Commission and chaired by Suresh Tendulkar. He was constituted to review the methodology for poverty estimation and to address the following shortcomings of the previous method. The previous method रे कौन shortcomings थिला कौन limitation थिला सेटा address करथिले. Obsolete consumption pattern were linked to the 1973-74 poverty line basket PLBS of goods and services, whereas there were significant change in the consumption pattern of the poor in time which are not reflected in the poverty line estimates. तो तांको कहिबा हिसाब रे 1973 रु 74 परठारु कंजम्पशन पैटर्न रे बहुत चेंज हे जाई जहा कि नुआ पॉवर्टी लाइन रे रिफ्लेक्टेड हे पारु नाही. तापरे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट देयर वर इशू with the adjustment of price for inflation both spatially माने across regions and temporarily माने across time inflation adjustment हेई पारु नथिला. Then health and education expenditure आगुरु poverty line assumed that health and education expenditure would be provided by the state and formulated poverty line accordingly. किंतु health और education रे expenditure सेटा आगुरु इग्नोर करा जाइथिला. तेंदुलकर कमिटी कौन सब सजेशन देइथिला तांको रिकमेंडेशन थिला शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन. इट बेस्ड इट्स कैलकुलेशन ऑन द कंजम्पशन ऑफ आइटम लाइक
cereal, pulses, milk, edible oil, non-vegetable items, vegetables, fresh fruits, dry fruits, sugar, salt, spices, other foods, intoxicants, fuel, clothing, footwear, education, medical, non-institutional and institutional entertainment, personal and toilet goods. Then uniform poverty line basket, unlike alert committee, which related to separate poverty line basket for rural and urban areas, Tendulkar committee computed a new poverty line for rural and urban areas for each state based on uniform poverty line basket URP, and found all India poverty line was 446.68 per capita in rural areas, 57880.80 per capita per month in urban areas. Private expenditure, incorporation of private expenditure on health and education while estimating poverty, price adjustment procedure and mixed reference period MRP. या विषय में डिटेल्स पढ़ा नेक्स्ट ईयर MRP URP आउ MMRP कौन ये स्लाइड देखा. देन रंगराजन कमिटी तापर आसला 2012 से सेटअप होता और सबमिटेड रिपोर्ट इन 2014 तार ऑब्जेक्टिव थिला कौन टू रिव्यू इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड एंड इंडिकेट वेदर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर एम्पिरिकल पॉवर्टी एस्टिमेशन कैन बी डेवलप्ड इन इंडिया. Second, to recommend how these estimates of poverty can be linked to eligibility entitlement under the various schemes of the government of India. The recommendation thila methodology used. The Rangarajan Committee estimates is based on the independent large survey of households by Center for Monitoring Indian Economy CMIE. Normative and behavioral level. Normative level से ideal and desirable level of nutrition, behavioral determination of non-food expenses, what people use or consume as per general behavior. The nutrition requirement थिला calories, protein and fat. Poverty threshold थिला 47 in cities, 32 rupees in village. तांगर सी देते मोडिफाइड मिक्सड रेफरेंस पीरियड. तो या पढ़ा आगु आम प्रथम देखा यूआरपी कौन, एमआरपी कौन, देन एमएमआरपी कौन. यूआरपी माने होची यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड. यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड. तो जदि आम 30 दिन भितर जहाँ जहाँ आइटम एक्सपेंडिचर करिचे ऑल आइटम सेटा होची यूनिफॉर्म इक्वल बा रिसोर्स पीरियड यूआरपी. तो यहाँ यूज करते दांडेकर रथ कमिटी, अलग कमिटी, लाकड़ावाला कमिटी मैंने यूज करते. देन आसला मिक्सड रेफरेंस पीरियड माने दुईटा रेफरेंस पीरियड हम प्रथम हम 365 डेज बा गोटे वर्ष भितर 5टा आइटम. कौन कौन आइटम? क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल, हेल्थ एक्सपेंडिचर. ये 5टी आइटम आम वर्षर थे कर तेणु 365 डेज. आउ किसी आइटम या छाड़देले जहाँ रहा अदर आइटम से आम 30 दिन थे मापिवा 30 दिन थे मन पकेबा. इट इज नॉट एप्लिकेबल फॉर ऑल आइटम यूनिफॉर्मली. तो किसी आइटम 665 डेज आउ किसी आइटम 30 डेज. तेणु यहाँ हूँ मिक्सड रेफरेंस पीरियड. किंतु जब सामान होता ताले सेटा यूनिफॉर्म होता यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड. एंड इट इज यूज्ड बाय तेंदुलकर कमिटी. तापर आछी मॉडिफाइड मिक्सड रेफरेंस पीरियड. एटा यूज करथिले श्री रंगराजन कमिटी. तो एथिरे तीन थर देखा जीवो. प्रथम 365 डेज बा गोटे वर्ष पई से 5टी आइटम क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ड्यूरेबल गुड्स. 7 डेज होची एडिबल ऑयल, एग, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, बेवरेज, रिफ्रेशमेंट, प्रोसेस्ड फूड, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स. 30 डेज होची फॉर रिमेनिंग आइटम fuel, light, miscellaneous goods and services including non-institutional medical, rents and taxes. तो ये 3टा रेफरेंस. प्रथम ये हूँ 365, 7 डेज और 30 डेज. तेणु यहाँ हूँ मॉडिफाइड मिक्सड रेफरेंस पीरियड. देन आम कि कंपेरिजन करवा तेंदुलकर कमिटी और रंगराजन कमिटी भितर. सेटअप होता 2005 रे तेंदुलकर कमिटी, बट सेटअप होता रंगराजन कमिटी 2012 रे.
रिपोर्ट सबमिट करते तेंदुलकर कमिटी 2009 रे किंतु रंगराजन 2014 रे। अर्बन एरियाज पई तार पॉवर्टी लाइन थिला 33 रुपीज किंतु रंगराजन रे 47 रुपीज। रूरल एरियाज पई 27 रुपीज किंतु रंगराजन रे 32 रुपीज। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 270 मिलियन तेंदुलकर कमिटी रे, 363 मिलियन रंगराजन कमिटी रे। तो आज वीडियो रे आमे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रे कौन कौन सब एस्टिमेशन है पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटी हेतला से विषय आम डिटेल्स रे पढ़िले। तो यार किछि निमोनिक्स देखिबा। PDALTR, P फॉर प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप 1962 मसीहा, D फॉर दांडेकर एंड रथ कमिटी 1971, देन A फॉर अलग कमिटी 1979, L फॉर लाकड़ावाला कमिटी 1993, तेंदुलकर कमिटी 2009, रंगराजन कमिटी 2014। तो तेंदुलकर कमिटी 2005 रे जदिबा सेटअप हेतला समिट रिपोर्ट करथिला 2009 रे, तो 9 बोल लिखा जीवो। रंगराजन कमिटी 2012 रे सेटअप हेतला किंतु तार रिपोर्ट सबमिट कर 2014 रे। सेति पई PDALTR होची यार निमोनिक्स। PDALTR होची पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटी। तार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखि दिया जाइछि एठी, मन रखिबे। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे अलग टॉपिक डिस्कशन करिबा। यदि वीडियो भल लागिथिबो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट्स माध्यम निजर मतामत ओपिनियन सब जणाइबे। थैंक यू।